Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is nursing care plan for bedridden patient or for patient on prolonged bed rest. Through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स यहाँ आप वीडियो की सहायता से आसानी से बेड रिडन पेशेंट और प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर बेड रिडन पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान फॉर बेड रिडन पेशेंट। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, जिसका यहाँ पर डायग्नोसिस होगा इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स यहाँ यूज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप नर्सिंग मैनेजमेंट केयर प्लान नंबर फर्स्ट का। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। इसमें होगा पेशेंट कंप्लेंट अबाउट फीलिंग फटीग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं सेकंड नर्सिंग असेसमेंट में। असेस रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड रिदम, असेस एयरवे फॉर पेटेंसी, auscultate lung sound, assess the vital signs. After these assessment, we write here the nursing diagnosis. यहाँ nursing diagnosis लिखेंगे हम ineffective airway clearance related to impaired respiratory functions। यहाँ nursing diagnosis होगा, goal होगा हमारा to maintain clear and open airway। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स हमारा प्लानिंग जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो हम इंटरवेंशन पेशेंट को देंगे उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने यहाँ पर प्लान किया है नर्सिंग इंटरवेंशन उसको एक्शन में लाना है। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, प्रोवाइड अपराइट पोजिशन टू द पेशेंट। रेशनल होगा अपराइट पोजिशन प्रोवाइड फॉर एन आइडियल बॉडी अलाइनमेंट फॉर मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा अपराइट पोजिशन गिवन। नंबर सेकंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज ऑर्डर। रेशनल होगा एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, फैसिलिटेड गैस एक्सचेंज एंड परफ्यूजन। इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड। नंबर थर्ड देखते हैं एनकरेज क्लाइंट टू डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। रेशनल होगा कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग हेल्प्स इम्प्रूव क्लियरिंग सिक्रेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज द क्लाइंट टू डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, एग्जाम्पल ब्रोंकोडाइलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीबायोटिक्स। रेशनल होगा फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। इम्प्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड। नंबर फिफ्थ देखते हैं पे कोलाबोरेट विद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेशनल होगा द पेशेंट माइट बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान सच एज चेस्ट फिजियोथेरेपी और शेड्यूल्ड नेबुलाइजर ट्रीटमेंट। इम्प्लीमेंटेशन होगा कोलाबोरेटेड विद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। रेशनल होगा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक में हेल्प थिनिंग सिक्रेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। नंबर सेवन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एट लीस्ट 30 डिग्री एट ऑल टाइम्स इफ द पेशेंट इज अनेबल टू मूव। रेशनल होगा कीपिंग द चेस्ट इन अपराइट पोजिशन हेल्प विद लंग एक्सपेंशन एंड रिड्यूस एस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा elevation given. Number 6 suction the patient if indicated. Rational होगा suctioning as needed will keep the airway clear. Implementation होगा suctioning completed.
After writing these interventions, we write here the evaluation steps इन नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान का इवेल्यूशन यहाँ पर हमको किस तरह से लिखना है। इवेल्यूशन होगा मेंटेन्ड क्लियर एंड ओपन एयर वे, मीन्स जो गोल था टू मेंटेन क्लियर एंड ओपन एयर वे हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको एवेल्यूशन में लिखना है मेंटेन्ड क्लियर एंड ओपन एयर वे, मीन्स हमने हमारा गोल था वो अचीव किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे फॉर बेड रिडन पेशेंट। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर बेड रिडन पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान फॉर बेड रिडन पेशेंट केयर प्लान नंबर 2 होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लिमिटेड मोबिलिटी। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट हो यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं असेस फॉल रिस्क एंड अदर पोटेंशियल हैजार्ड्स। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लिमिटेड मोबिलिटी, गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट ट्रांसफर द पेशेंट टू ए रूम नियर द नर्सेज स्टेशन, रेशन होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स टू कॉल नीड्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू नर्सेज स्टेशन। नंबर सेकंड familiarize the patient with the layout of the room, रेशन होगा इंजरी इज मोर लाइकली टू बी experienced by an individual if the surroundings is not familiar. Implementation of patient familiarized with the room. Number third, provide appropriate room lighting, especially at night. रेशन होगा improvement in lighting reduce fall and injury. Implementation होगा proper lighting available. Number fourth, provide assistive devices for transfer and ambulation. रेशन होगा assistive aids such as cane, walker and wheelchair can improve patient stability and balance when ambulating. Implementation होगा assistive device provided. Number 6 fifth intervention देखते हैं place items the patients uses within easy reach such as call light, urinal, water, telephone. रेशन होगा items that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be a hazard or contribute to fall. Implementation होगा placed item in easy reach. Number 6 intervention देखते हैं encourage assistance when getting out bed. रेशन होगा encourage the patient to use their call button and request assistance when going to the bathroom or getting out of bed to promote safety. Implementation होगा encouraged. नंबर 7 देखते हैं रेस्पॉन्स टू कॉल लाइट एज सुन एज पॉसिबल. रेशन होगा हेल्प्स प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ बेड विदाउट एनी असिस्टेंस. इम्प्लीमेंटेशन होगा रेस्पॉन्डेड टू अर्ली. नंबर 8 इंटरवेंशन देखते हैं प्लेस बेड एट द लोवेस्ट पॉसिबल पोजिशन. रेशन होगा कीपिंग द बेड क्लोजर टू द फ्लोर रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल एंड सीरियस इंजरीज. इम्प्लीमेंटेशन होगा बेड प्लेस नियर लोवेस्ट पोजिशन. नंबर 9 इंटरवेंशन देखते हैं यूज साइड रेल्स ऑन बेड एज नीडेड. रेशन होगा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉल. इम्प्लीमेंटेशन होगा साइड रेल्स यूज्ड. नंबर 10 इंटरवेंशन देखते हैं असिस्ट पेशेंट विद फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंजेस. रेशन होगा असिस्टिंग विद फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंजेस विल डिक्रीज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ स्किन इंजरी. इम्प्लीमेंटेशन होगा असिस्टेड ड्यूरिंग पोजिशन चेंजेस. नंबर 11 इंटरवेंशन देखते हैं आस्क फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर टू बी विद द पेशेंट टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्सीडेंटली फॉलिंग और पुलिंग आउट ट्यूब्स. रेशन होगा दिस इज टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एक्सीडेंटली फॉलिंग और पुलिंग आउट ट्यूब्स. इम्प्लीमेंटेशन होगा आस्क फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर. नंबर 12 इंटरवेंशन देखते हैं कोऑर्डिनेट विद द फिजिकल थेरेपिस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड गेट ट्रेनिंग टू इंक्रीज मोबिलिटी. Contact occupational therapist for assistance with helping patients from activity of daily living. रेशन होगा get training in the physical therapy has been proven to effectively prevent fall.
इम्प्लीमेंटेशन होगा कोऑर्डिनेटेड विद थेरेपिस्ट। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस भी राइटेड द इवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं यहाँ पर इवेल्यूशन में हमको यहाँ पर लिखना है नाउ रिस्क फॉर इंजरी रिड्यूस्ड। जो गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 फॉर बेड रिडन पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 होगा यहाँ पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन, ऑब्जेक्टिव डेटा असेस द स्किन कंडीशन, changes in the appearance of the affected area, redness, swelling, hot and tender to touch. After writing these interventions, these assessment data, we write the nursing diagnosis. Nursing diagnosis होगा यहाँ पर impaired skin integrity related to prolonged bed rest. गोल होगा to maintain skin integrity. इंटरवेंशन होगा फर्स्ट यहाँ पर इंस्पेक्ट द अफेक्टेड स्किन साइट एट लीस्ट वंस पर डे। रेशन होगा रेगुलर असेसमेंट हेल्प इन द इंटरवेंशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा इम्पेयर्ड स्किन इंस्पेक्टेड। नंबर 2 देखते हैं टर्न एंड रिपोजिशन द पेशेंट एवरी 2 आवरली। रेशन होगा रेगुलर रिपोजिशन, रेगुलर पोजिशन चेंज रिड्यूस प्रेशर एंड शिफ्ट प्रेशर टू डिफरेंट बॉडी एरिया अलाउइंग adequate tissue perfusion and reducing the risk of skin breakdown. Implementation होगा reposition patient frequently. Number 3 use the warden skill. रेशन होगा to identify patients at high risk of developing pressure sore. Implementation होगा warden skill use. Number 4 देखते हैं use friction and pressure reducing items such as especially mattress, body aligners, pillow, moon boots, cushion. Rational होगा helps in reducing pressure and friction, reducing the risk for tissue injury. Implementation होगा friction pressure reducing item used. Number 5 give bad bath to patient. Rational होगा prolonged contact of the skin with moisture and soil irritates the skin and predisposes it for skin breakdown. Implementation होगा bad bath given to patient. Number 6 देखते हैं यहाँ पर 6 इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड बैलेंस डाइट, कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन एंड विटामिन्स, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। रेशन होगा हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट फैसिलिटेट बोन्ड हीलिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा बैलेंस डाइट प्रोवाइडेड। नंबर 7 इंटरवेंशन देखते हैं क्लीन द पेशेंट्स बोन्ड विद aseptic टेक्निक्स। रेशन होगा स्टेल टेक्निक्स रिड्यूस द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन होगा क्लीन द बोन्ड विद aseptic टेक्निक्स। नंबर 8 इंटरवेंशन देखते हैं मॉनिटर फॉर एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। रेशन होगा फीवर में भी ए साइन ऑफ ए सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन होगा टेम्परेचर मॉनिटर। नंबर 9 मॉनिटर WBC, प्री एल्बुमिन एंड टोटल प्रोटीन लेवल। रेशन होगा दीज वैल्यूज इंडिकेट साइन ऑफ इन्फेक्शन and malnutrition which can cause tissue breakdown and complications with healing. Implementation होगा monitor WBC, pre-albumin, albumin and total protein level. Number 10 provide tissue care as needed. Reason होगा the dressing replaces the protective function of the injured tissue during the healing process. Implementation होगा tissue care provided. Number 11 देखते हैं पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल हाई रिस्क एरिया सच एज bony prominences, skin folds, sacrum and heels. रेशनल होगा systematic inspection can identify impending problems early and provide early treatment. Implementation होगा special attention paid to high risk areas. Number 12 intervention देखते हैं discourage the patient from rubbing, scratching the affected area. रेशनल होगा friction can make already injured tissue or bacteria could be introduced into open bone tissue and prolong the healing process. Implementation हुआ discourage for rubbing and scratching. Number 13 intervention देखते हैं teach the patient and family about correct wound care techniques,
Rational होगा knowing the importance of clean dressing changes and the importance of each step reduce the risk of infection and complications. Implementation होगा teach about the correct wound care. Number 14 देखते हैं यहाँ पर educate about the sign and symptoms of infection and when to notify healthcare personnel. Rational होगा being aware of symptoms promotes early interventions. Implementation होगा education is given about sign and symptom of infection. नंबर 15 देखते हैं एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस एज ऑर्डर्ड. रेशन होगा मेडिकेशंस एज थेरेपेटिक पर्पस. इम्प्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द इवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का इवेल्यूशन. यहाँ पर इवेल्यूशन होगा स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन. गोल था हमारा टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, वो हमने अचीव किया है बाय डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड करा है. तो इवेल्यूशन में हमको यहाँ पर लिखना है स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन. तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 फॉर बेडरिडन पेशेंट. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 तो यहाँ पर इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट verbalize that I am anxious because prolonged hospitalization. And objective data assess anxiety, emotional tension, depression and stress. On the basis of these data we write the nursing diagnosis. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. गोल होगा टू मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग. नर्सिंग इंटरवेंशंस देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस द पेशेंट इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेसर्स एंड पॉसिबल प्लान फॉर कोपिंग विद दैम. रेशनल होगा रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेसर्स इन द फर्स्ट स्टेप इन अल्टरिंग वंस रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर. इम्प्लीमेंटेशन होगा पेशेंट असिस्टेड. नंबर 2 देखते हैं इंटरवेंशन एनकरेज द पेशेंट टू इंक्लूड इन केयर प्लानिंग एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट प्लान. रेशन होगा इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड द पेशेंट विद एन ऑनगोइंग सेंस ऑफ कंट्रोल, improves coping skill and can enhance cooperation with the therapeutic regimen. Implementation होगा encourage the patient. Number 3 intervention encourage the patient to evaluate life priorities and goals. रेशन होगा focus patient's attention on the reality of present situation relative to patient's view of what is wanted. Implementation होगा encourage the patient to evaluate life priorities and goals. Number 4 intervention देखते हैं assist the patient in identifying and begin planning for necessary lifestyle changes. Assist in adjustment rather than the abandon personal family goals. Rational होगा necessary changes should be realistically prioritized so patient can avoid being overwhelmed and feeling powerless. Implementation होगा patient assisted in planning. Number 5 intervention देखते हैं allow the client to express feeling. Rational होगा feeling expression reduce stress and anxiety. Implementation होगा allow the client to express feelings. Number 6 intervention देखते हैं encourage for activity as per tolerance level. Rational होगा activity reduce stress and anxiety. Implementation होगा encourage for the activity as per tolerance level. Number 7 intervention देखते हैं motivate the client for positive thoughts. Rational होगा to provide meeting psychological needs. Implementation होगा patient motivated for positive thoughts. Number 8 intervention देखते हैं encourage the client to doing yoga, meditation, therapy, etc. Rational होगा these provide relaxation and reduce stress. Implementation होगा encourage the client to doing yoga, meditation, therapy, etc. After writing these interventions we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का यहाँ पर evaluation. evaluation होगा maintained effective coping. जो गोल हमारा टू मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. केयर प्लान नंबर 5 तो यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फूड इनटेक.
तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट होगा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट द डिसलाइक ऑफ फूड एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग वीक एंड टायर्ड। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर assess the patient's weight, assess nutritional status, assess the vital signs, increase blood pressure and heart rate. On the basis of these data, we write the nursing diagnosis. Nursing diagnosis का imbalanced nutrition less than body requirement related to inadequate food intake. गोल होगा to maintain nutritional status. Nursing intervention देखते हैं first obtain the patient's weight ration होगा daily weight provide feedback about whether the treatment plan need adjustment. Implementation को obtain the patient's weight. Number second, provide good oral care rational to enhance appetite and patient interest in eating. Implementation of oral care given. Number third, provide a pleasant environment rational. A pleasant environment without distraction noise improve the eating rational. Pleasant environment given. Number fourth, give assistance while eating rational. Facilitate the process and help the patient conserve energy for eating. Implementation of assistance given during eating. Number fifth intervention होगा when feeding a client to be patient. When feeding a client, be patient and allow enough time to complete the meal. Rational होगा offering enough time between bites to thoroughly chew the food and offering sips to drink makes the meal more enjoyable and encourage the patient to eat as much as possible. Implementation होगा enough time given. Number 6 intervention देखते हैं encourage nutritional supplements and healthy snacks between meals. रेशन होगा extra snacks and supplements such as nutritional shakes increase caloric intake. Implementation होगा encourage for nutritional supplement. Number 7 intervention देखते हैं provide small frequent meal instead of 3 full meal. रेशन होगा small frequent portion might be more tolerable and increases overall calorie intake. Implementation होगा small frequent meal given. Number 8 intervention देखते हैं anticipate the need for parenteral or enteral nutrition tube feeding. रेशन होगा if the patient cannot take insufficient nutrient by mouth, other options are via a tube to the stomach or intravenously. Implementation होगा anticipated the need for parenteral or enteral nutrition tube feeding. Number 9 देखते हैं collaborate with the dietitian regarding the nutritional status and diet planning. रेशन होगा based on lab values assessment and other indicators the dietitian can determine the patient's daily caloric and nutritional requirements to increase the weight and maintain a ideal weight. Implementation को collaborated with the dietitian. Number 10 intervention देखते हैं administer pain medications and antiemetics as ordered. रेशन होगा nausea and pain may decrease his appetite. Treating these conditions will well before meal time. Implementation होगा medication administered. Number 11 देखते हैं provide proper body positioning while eating. रेशन होगा elevating the head of the bed or even placing the patient in the chair while eating ensure best posture possible for food digestion. Implementation होगा provided a proper body positioning while eating. Number 12 intervention देखते हैं discourage caffeinated or carbonated beverages. रेशन होगा these beverages can spoil the patient's appetite by decreasing hunger and can lead to early satiety. Implementation होगा discourage caffeinated or carbonated beverages. Number 13 intervention देखते हैं provide nutritional education about dietary guideline. रेशन होगा patients and family members need to have nutritional knowledge about food groups to maintain adequate and healthy nutrition at home. Implementation होगा nutritional education given. After writing these interventions we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation केयर प्लान नंबर 5 का इवेल्यूशन होगा पर मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस. कॉल द टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस वो हमने अचीव किया हुआ है डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस. तो इस तरह से हम यहाँ पर केयर प्लान नंबर
5th को लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6। नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6 होगा यहाँ पर लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू फिजिकल डिपेंडेंस। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स, आई एम ए फेलियर, नो वंस केयर अबाउट मी। ऑब्जेक्टिव डाटा, असेस कंटेंट ऑफ नेगेटिव बिलीफ्स। नर्सिंग डायग्नोसिस को लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू फिजिकल डिपेंडेंस, गोल होगा पेशेंट वर्बलाइज फीलिंग्स, सेंस ऑफ इंक्रीज सेल्फ वर्थ। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फियर, नेगेटिव फीलिंग्स एंड ग्रीफ। रेशनल को to help the patient begin to deal with the fact and reality. Implementation will encourage expression of fear, negative feelings and grief. Number second intervention होगा determine specific cause for low self-esteem. रेशनल होगा though the patient's lack of self-esteem is chronic, assess current and past factors affecting their self-concept such as past abuse or neglect from family, bullying from peers, etc. Implementation of determine specific cause for low self-esteem. Number 3 intervention देखते हैं identify family or social support. रेशनल का assess for any family, friends or other support systems such as co-workers that may be contributing source of low self-esteem or a positive influence. Implementation होगा identify family or social support. Number 4 intervention देखते हैं develop a therapeutic relationship. रेशनल होगा मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिवली लिसन एंड डू नॉट डाउनप्ले और डिसमिस द पेशेंट्स स्टेटमेंट और परसेप्शंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा थेरेपेटिक रिलेशनशिप मेंटेन। नंबर 5 प्रोवाइड थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन। रेशनल होगा टू फैसिलिटेट रिकवरी। इम्प्लीमेंटेशन होगा थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। नंबर 6 ascertain इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाई प्रीवियस पॉजिटिव कोपिंग बिहेवियर। रेशनल होगा हेल्पफुल टू बिल्ड on strength that already available for the patient to use in coping with current situation. Implementation होगा ascertain individual strength and identify previous positive coping behavior. Number 7 intervention होगा encourage participation in activity of daily living. Rational होगा promote independence and enhance feeling of self worth. Rational implementation होगा encourage participation in activity of daily living. Number 8 intervention को provide opportunity to view and point out positive sign of healing. Rational को to help the patient with his acceptance. Implementation को opportunities provided. Number 9 intervention होगा discuss and confront misconception. Rational को an outside perspective may aid the patient in recognizing their self-limiting beliefs. Implementation को discuss about the misconception. नंबर 10 इंटरवेंशन होगा मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर एंड असिस्ट विद द गोल सेटिंग। रेशनल होगा दिस कैन इंक्रीज द पेशेंट्स सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इन देयर एबिलिटीज। इम्प्लीमेंटेशन होगा असिस्टेड विद द गोल सेटिंग। नंबर 11 रेफर टू रिसोर्सेज एंड काउंसलिंग। रेशनल होगा क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम में रिक्वायर द हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। Implementation होगा refer to resources and counseling. After writing these interventions we write the evaluation steps. तो ये evaluation होगा केयर प्लान नंबर 6 का। Now patient verbalize feeling sense of increased self worth and come out from low self esteem. तो इस तरह से हम यहाँ पर केयर प्लान नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।